Nature and characteristics of party system in India, page number 38 of Bureau book. Open the book at page 38, authorized by Bureau. First characteristics is a multi-party system, students. A large number of political parties today dominate the political scene in India. Although, by and large, there is a bewildering variety of political parties in India, they have not shown the stability of other democracies like Britain or USA. Usually, political parties are formed on the basis of a definite social interests or political ideologies. But because of so many factors, they fail to maintain the tempo for which they are created. As a result of this, they just fail to flourish and lie as a dormant organization or liquidate itself. What is the meaning of a multi-party system? When we are getting through the characteristics of party system in India, first is a multi-party system. That means more than two parties. One party jodi haba single party system, dita party rahile bi-party system, more than two hoche multi-party system. A large number of political parties today dominate the political scene in India. India re by and large maximum political party originate hochandi. तार कारण कौन? नेशनलिस्टिक पार्टी जो रहिले सेंटर रे सेमाने स्टेबल नहति. नेशनलिस्ट पार्टी जदि हमें कहबा वर्तमान सुधा 8टा नेशनलिस्टिक पार्टी अछंती इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी स्टिल देन तीनटा पार्टी तांको पोटेंशियलिटी हरै सरलेनी. हमें जते बेले पार्टी सिस्टम को जीवा पर हम डिस्कशन करै देबी. सीपीएससी रो भी गोटे चैप्टर एटा थिला तार जेरोक्स भी अछि. हमें भी आज व्हाट्सएप रे सेंड कर दो गला बेले को देखि नियो डिटेल स्टडी करो. देखो ताले although by and large there is a bewildering variety of political parties in India, they have not shown the stability of other democracies like Britain or USA. ते काई बंद करछो? खोल दिया से आसन क्या देखा पिले ताले में देखिबा ब्रिटेन रे किंबा अमेरिका रे जदि हमें कहबा अमेरिका रे गोटे पार्टी जदि रूलिंग रे अछि आ गोटे रहबो अपोजिशन. गोटे पार्टी जदि रहबो अपोजिशन ने आ गोटे रहबो रूलिंग रे सेठी गोटे रहिछि स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. इंडिया रे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाही. जते जण विशेष करी जतेटा डिस्ट्रिक्ट अछि सेतेटा हमर कोन हो इंडिया रे पार्टी सिस्टम ए जई कर. तने जदि हमें कमेंटिंग सेक्टर को जिपा. Usually political parties are formed on the basis of definite social interest or political ideologies. प्रत्येक पार्टी रे गोटे आइडियोलॉजी थाए, प्रत्येक पार्टी रे गोटे सोशल इंटरेस्ट थाए, ताको बेस करी हमें कोन करूचे फुलफिलमेंट करूचे हमर पार्टी सिस्टम को. बट बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स दे फेल टू मेंटेन द टेम्पो फॉर व्हिच दे आर क्रिएटेड. बहुत गुडे फैक्टर अछि जो फैक्टर पई जोटा हमें पॉलिटिकल समय रे इलेक्शन समय रे कमिटमेंट करू सेटा को फुलफिलमेंट करि पारु नाही. Because so many factors they fail to maintain the tempo for which they are created. As a result of this, they just fail to flourish and lie dormant organization or liquidate itself. Dormant, ineffective. तमर यदि बैंक अकाउंट थिबो बैंक अकाउंट रे आधार कनेक्शन न करिबो it would be similar to that of dormant. एटा कोन हो कि लिक्विडेट हे जिवो. तेनु dormant or liquidate means ineffective. Political party जाके जेतेबेले ताका ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट न कले सेतेबेले से माने कोन होंती डॉर्मेंट किबा लिक्विडेट हे जानती. Then students, proliferation of regional parties. No sovereign territory has such a wide range of socio-cultural and ethnic diversities as in India. These diversities naturally therefore are expressed in the form of regional parties in order to bargain with the center for a better deal. पहले देखा सेंट्रल गवर्नमेंट सहित हमको कॉम्प्रोमाइज करिया को पड़िबो. सेंट्रल गवर्नमेंट जदी तमे जानि थिबो इंडिया रो पॉलिटिकल सिस्टम गोटे होची व्हीलिंग प्रोसेस. गोटे जदी सेंट्रल व्हील आ गोटे हला स्टेट व्हील. सेंट्रल व्हील सहित हमको मार्च करि के व्हीलिंग प्रोसेस रे रहिया को पड़िबो. नले हमको डीरेल हबा को पड़िबो, डी चेन हबा को पड़िबो. तेनु सेंट्रल गवर्नमेंट जो आइडियोलॉजी कहते बेले बेले हमको एक्सेप्ट करिया को पड़े. फिर भी केतेटा अछि तमे देखिबो सेंटर स्टेट रिलेशन रे बहुत गुडा कांसेप्ट को कोन करूची ना इंडियन गवर्नमेंट रो कांसेप्ट को ओडिशा गवर्नमेंट एक्सेप्ट करूनी. से गुडा के सब रही छि नियर अबाउट 14 आइटम्स आर देयर. आयुष्मान योजना सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कले, स्टेट गवर्नमेंट ताको कोन कले बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना. विशेष करी
वन रेशन वन नेशन से कॉन्सेप्ट मध्ये आसे एम 14 टा कॉन्सेप्ट अछि पिले फेडरलिज्म सेक्टर रे हम डिस्कशन करिबा ताले आमे देखबो बेले बेले कोन हुए ना सेंट्रल गवर्नमेंट सहित स्टेट गवर्नमेंट कंप्रोमाइज करी चाली पारंती एवं बेले बेले चाली पारंती नाही किंतु फेडरल सेटअप को फुलफिलमेंट करबा को गेले प्रोलिफरेशन ऑफ रीजनल पार्टीज को सक्सेस करबा को हेले आमे सेंट्रल गवर्नमेंट सहित मार्चिंग करिया को बड़ी थाए नेक्स्ट स्टूडेंट्स इट इज सीन फ्रॉम एक्सपीरियंस द नेशनल पार्टीज हैव फेल्ड टू गिव due weightage to their state and local units. I'm not taking that seriously. This attitude of the central leadership over the years has created bitterness and resentment in the rank and file of the parties. देखो पहले maximum time गोटे term सुनती हो तमे डबल इंजिन माने सेंट्रल गवर्नमेंट रे जोटा जदी रीजनल बा स्टेट रे सेटा रहे जदी ए दीटा गवर्नमेंट भीतर किछि वेरिएशन आसिला ताले ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट रो फंक्शनिंग एते भलो होबो नाही प्रैक्टिकली देखुथिबा सेंट्रल रहिला हमर बीजेपी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल रे अछंती ममता बनर्जी टीएमसी सी कोन करंती चैलेंज करंती मोदी गवर्नमेंट को कंप्रोमाइज करंती नहीं कारण तांकर स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी मध्ये अछि under the situation the local leaders of the party had no hesitation to quit the main party and form the regional parties to attract the people of the state केमिति regional party गुडा national level attraction आनती फर्स्ट होची बंगला कांग्रेस सेकंड केरल कांग्रेस थर्ड देखो and the Biju Janata Dal are examples of such parties ये माने regional party हेले मध्य ये मानकर attraction अछि state leadership ପାଇଁ besides this the tribal and backward classes also formed their own parties to maintain their identity the Mizoram National Front eta मन रखिबो MNF Mizoram National Front the all party Hill Leaders Conference APHLC the Jharkhand Mukti Morcha are examples of such parties the ethnic and linguistic group have also come out with their own parties in Tamil Nadu आंध्र प्रदेश पंजाब आसाम जम्मू एंड कश्मीर पहले देखा जदि हमें चाहिबा गोटे गोटे एथनिक आ लिंग्विस्टिक जेते बेले न्यूली स्टेट फॉर्मेशन करा जाउची बा रीजनल पार्टी फॉर्मेशन करा जाउची बा स्टेट पार्टी फॉर्मेशन करा जाउची सेते बेले टिके इफेक्ट रहउची कहार ना लैंग्वेज को बेस करी हमें टिके अप्रिशिएट करूचे रिलीजन को बेस करी हमें अप्रिशिएट करूचे हमें कहूचे हमें सेक्युलरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करूछु पहले इलेक्शन पूर्व हमें राम मंदिर प्रतिष्ठा करूछु सेक्युलरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक हमें फुलफिलमेंट करूछु हमें पुनी कोन करछु रैशनल रिकमेंडेशन करूछु रेक्टिफिकेशन करूछु तेनो पिले बेले बेले एमिति हुए एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैव आल्सो कम आउट विथ देयर ओन पार्टीज तमिलनाडु रे तमे जानिथिबो जयललिता का समय रे ताकर गुडा हाइलाइटिंग रीजनल पार्टीज आंध्र प्रदेश रे हमर तेलुगु देशम पार्टीज पंजाब रे जदि हमें कहिबा विशेष करी अकाली दल हमर आसाम रे सेमति कोन आस्तिला आसाम रे बोडो तार सुप्रीमो थिले प्रफुल्ल महंत जम्मू काश्मीर रे जेकेएनएफ लिबरेशन फ्रंट टू प्ले ए क्रिटिकल रोल एज ए बैलेंसिंग फैक्टर बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज इन द पार्लियामेंट स्टेट रे हो किबा पार्लियामेंट रे हो लेजिस्लेचर रे हो किबा पार्लियामेंट रे हो आंकर किछि इफेक्टिव रोल हुए एंड ग्राफ पावर इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू all these factors have led to the growth of large number of regional parties in the political scenario of India रे विशेष करता में देखिबा कटक टाउन कथा भाबिनियो कटक टाउन में मैक्सिमम वर्तमान कोन करचंती ना इंडिपेंडेंट पार्टी अछंती इंडिपेंडेंट पार्टी जदी विनिंग करि जिबे आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टी माने को परचेस करनेबे अंतर हाइट आसीगला डिमांड आसीगला दि तीनटा इलेक्शन रे जदी एम दिखाली माने कोन करती फॉल्स राउंड अप करंती ऑटोमेटिकली गोटे रेपुटेशन आसीबो एटलीस्ट केई त जे लीडर एमएलए से तो जानिबो मो अगेंस्ट की कंटेस्ट करथिला ना आ जे छिडा होची माने तार त किछि किछि लोकल वोट रहउची किछि इंटिमेंसी वोट रहउची सो स्टूडेंट्स lack of a proper organization first hela multi party system second proliferation of regional parties third lack of a proper organization हम इंडिया रो पार्टी सिस्टम रो कोन से गोटे परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नाही the party system in India is marked by a lack of a proper organizational elections and a democratic functioning hardly the parties have evolved reliable mechanism and workable procedures for managing its affairs बहुत समय इंडिया रो पार्टी सिस्टम रे कोन देखा जाए ना प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन ने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कोन प्रत्येक पार्टी रो गोटे किछि ना किछि मैनिफेस्टो रहउची
प्रत्येक पार्टी रो गोटे गोटे इलेक्टोरल आमे जो कहूछ निर्वाचन इस्ताहार रहउची से गुडा प्रॉपर वे रे फंक्शन करूनी कारण कोन इलेक्शन परे परे हमर वोटर बा इलेक्टोरेट सहित संपर्क रहउनी आमे जाय कि जे जो कैबिनेट रहइबा का रहिला जे सेंट्रल लेवल रहिला जे जो स्टेट लेवल रहिला जेतेबेल कार दरकार पड़ले गले से माने सब अचिना भली बाबुचंदी जोटा के डिमांड फुलफिलमेंट हो नाही the top leadership dominates the working of the parties and avoids internal elections to choose party managers बेले बेले जो टॉप लेवल रहला पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से माने कोन करंती डोमिनेट करंती लोकल लीडरशिप ऊपर virtually all of them are named by the top leadership this practice while strengthening the influence of the party chief weakens the party organization as a whole and affects the growth of internal democracy and leadership पिले तमे देखिनी प्रत्येक लीडर को ना रे गोटे गोटे बीफेम आसुची केवल इंडिया रे नुई अमेरिका रे मध्य इंग्लैंड रे मध्य किंतु अमेरिका रे किबा इंग्लैंड रे जीए हेले भी गोटे पार्टी विन करिवो तांकर बाई पार्टी सिस्टम अछि जदि गोटे लीडर ता कोन जगह डीफेम हैला अपोजिट जो लीडर से कोन करियो मेजॉरिटी आनी परिबो किंतु इंडिया रे हमर कोन की जदि गोटे लीडर ना रे कोनसी प्रकार ब्लेमिश एटीट्यूड आसिला सी तो मेजॉरिटी पाइबनी लोकल लीडर माने भी मेजॉरिटी पाइबे नाही जोटा हम पई होची पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एंड लीडरशिप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इंटरनल डेमोक्रेसी मींस इंटरनल पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट इंटरनल पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट तमे देखिबो हमर जदि बीजेपी रे कोनसी लोक गोटे टिकट पाइलानी से संग संग बीजेपी नाले कांग्रेस को पळे जाउची कांग्रेस रे गोटे लोक टिकट पाइलानी से साथ साथ बीजेपी नाले बीजेडी की पळौची तनो आम मानक भितरे पर्टिकुलरली इंटरनल डेमोक्रेसी एब्सेंस अछि इन दिस सेंस कोन पॉलिटिकल इक्वालिटी के आमे कोन करनु प्रीडोमिनेंस दउनु मेंटेनेंस दउनु प्रॉपर वे रे अंडरस्टैंडिंग भितरे रखुनु लीडर्स मोर इंपोर्टेंट देन आइडियोलॉजी हमर आगे थिला कोन की तमे देखिबो बहुत भलो भलो फिलोसोफर्स थिले यू मस्ट बी नोइंग अबाउट जेपी जयप्रकाश नारायण तांकर जो पॉलिसी गुडा थिला सेक्युलरिस्टिक कैरेक्टर से भलिया लीडर वर्तमान नाहंती कहले चले तनु लीडर्स मोर इंपोर्टेंट देन आइडियोलॉजी आगे थिला हमर कोन आइडियोलॉजी मच मोर इंपोर्टेंट देन लीडर्स वर्तमान लीडर ऊपर हमें कोन करछु एम्फसाइज करछु लीडरशिप क्वालिटी ऊपर हम एम्फसाइज करछु 1984 इलेक्शन रे तमे जानी थिबो सुंदरलाल बहुगुणा बहुत बढ़िया पॉलिटिकल लीडर एनवायरमेंटलिस्ट सब बेले डोमिनेटिंग रे कोन करथिले इलेक्शन जीति के आस्थिले किंतु तांको अगेंस्ट छिडा हले अमिताभ बच्चन लोक का वोट दिथिबे अमिताभ बच्चन भाबिनी तनो जदी देखिबा हमें रियली गोटे उत्कल यूनिवर्सिटी बाणी बिहार रे गोटे पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर से बर्तन पॉलिटिक्स रे इन्वॉल्व हेबे किंतु गोटे क्रिकेटर किमा गोटे पॉलिटाम हमरा विशेष करी फिल्म एक्टर बा एक्ट्रेस इन्वॉल्व हो एक्टर एक्ट्रेस पाइबे किंतु फिल्म गोटे पीएचडी होल्डर पाइबो कारण कोन एनलाइटनमेंट अवेयरनेस लोक माने काहा को अधिक जानउछन सुनुछन पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर केइटा लोक जानउछन जो भी सी एमफिल कले कि तांको पीजी पिला जानिले फिल्म एक्टर एक्ट्रेस छोटो पिला भी जानउछन leaders more important than ideology भितर हमें पुणी देखुचे there is hardly any ideological difference among political parties in India except of course a few parties the ability to influence voters and the capacity to find the organization enables a leader to form a party with his own followers who almost blindly extend their support to their mentor this has been the case with most of the political parties पिले तमे जानि थिबो रामकृष्ण परमहंस को बेसी लोक जानी नथिले कहा पे जानिले स्वामी विवेकानंद को पई स्वामी विवेकानंद कर सेही बड़ी अटैचमेंट रहितिला रामकृष्ण परमहंस तमे देखो सचिन तेंदुलकर को पई रमाकांत आर्चर को जानिले लोक जदि सचिन तेंदुलकर भल न खेली थांते रमाकांत आर्चर को के जानि था कहबार उद्देश्य बुझी परछ पिले तनु गोटे पॉलिटिकल फील्ड रे यदि हमें देखिबा महात्मा गांधी कर गुरु किए बीके गोखले कर सेते किछि इंप्राइज रोल नथिला किंतु जेते बेले कहउछनी महात्मा गांधी कर पॉलिटिकल गुरु ताको इंपोर्टेंस बढ़ जाउछ तनु पॉलिटिकल फील्ड रे सब बेले जेत मन रख हमर विशेष करी मास्टर आ पीपल रिलेशनशिप रहउची केही ना केही जने पॉलिटिकल फिगर को ताको गुरु हिसाब रे बा मेंटर हिसाब रे एक्सेप्ट करूछन प्रत्येक फील्ड रे
तमे हिस्ट्री पाठ पढ़ुच, पॉलिटिकल साइंस पढ़ुच, सोशियोलॉजी पढ़ुच, इंग्लिश पढ़ुच, ओडिया पढ़ुच, टीचर मानक प्रति अटैचमेंट आम कोचिंग टीचर नहेले कॉलेज टीचर नहेले स्कूलिंग टीचर कौन सी टीचर नहेले तुम गार्डियन अच्छा बाबा कि मामा से प्रति तुम अटैचमेंट रहा दरकार दैट इज नथिंग बट मेंटरशिप कहा तुम प्रिफरेंस करूच का आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करूच सो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन इन द सेंस स्लीपिंग गोटे पार्टी आम फंक्शन करूचे देखिले जिते से पार्टी डिफिट होगा समय आसीगला आम कौन कर डिफेक्शन मान हूँ दल बदल गोटे दल रू आउ गोटे दल को आम कौन कर स्किप कर जाऊे यहाँ तो नेचुरल आम क्यारेक्टर हो गला इंडियन मानकर मासक पूर्व ब्लेम करेंगे जो गवर्नमेंट को पुणी से जॉइन कर ना यहाँ होनी तेणु पिले फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन यहाँ आमर गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स रोचे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम लिविंग वन्स ओन पार्टी and joining another party for specific interest is called political defection जे जो पार्टी रे 5 वर्ष पई रहिला से पार्टी रा आइडियोलॉजी के एक्सेप्ट कला परवर्ती 5 वर्ष रे पूर्ण चेंज हो जाउची तको हम पॉलिटिकल डिफेक्शन कहूचे दिस डिफेक्शन हैज अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया वेरी बैडली सिंस 1967 the fourth general elections grid for power lust for prominence have so much affected the top leaders in India that they have no hesitation to leave their parties for the sake of those. Sometimes parties falling short of a majority allure members from other parties to join their party with assurance to include them in the council of ministers or to give them other prominent positions in the government. Defections have very badly affected the political stability of the country. Frequent political defection जदि political defection कथा में कहबा since 1967 फोर्थ जनरल इलेक्शन परे परे हमर पार्टी सिस्टम रे कोन रही छि ना विशेष कर डिफेक्शन ता परफॉर्मेंस करूछि अर्थात मैक्सिमम लीडर अछंदी जते बेले तांकर एम्बिशन फुलफिलमेंट न होछि गोटे पार्टी रे रहिला परे आ गोटे पार्टी की स्किप करि जाउछंती या द्वारा कोन होछि पहिले पार्टी रो ओरिजिनलिटी रहउनी पार्टी रो एनफोर्सिंग अथॉरिटीज रहउनी आमे प्रेडोमिनेटली कहि परुना जे आमे गोटे पार्टी रो मेंबर बोली लैक ऑफ इनर डेमोक्रेसी इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस देख पिले यदि आमे इनर डेमोक्रेसी कथा कहबा इंटरनल डिसिप्लिन इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनल प्रोग्रामिंग एक्शन लैक ऑफ इनर डेमोक्रेसी इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस a common feature of party system in India that we come across is that there is no regular organizational elections and democratic functioning within the parties. No party has evolved reliable mechanism and workable procedures for managing its affairs. The top leadership dominates the working of parties and avoids organizational elections to choose different office bearers. Virtually all of them are nominated by the top leadership known as high commands. This practice, while strengthening the influence of the high command, weakens the party organization as a whole, affecting the growth of internal democracy and leadership. Internal democracy means the organizational efficiency of the members. गोटे पार्टी रे तुमे रहिलो पार्टी पई तुमर केछि सैक्रिफाइस बा डेडिकेशन रहिबो गोटे इलेक्शन रे तुमे जीति पारो कि हारि पारो किंतु तुमर प्रेडोमिनेंसी बा लीडरशिप के समते पसंद करिवे किंतु वर्तमान जो चली छि मॉडर्न डेमोक्रेसी रे कोन चली छि ना समस्त टिके लुक्रेटिव हे जाउचंदी आलूर होउचंदी टुवर्ड्स पार्टी सिस्टम टुवर्ड्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स विथहोल्डिंग पावर केमिति पावर टाको मेंटेन करिवे एवं पावर द्वारा कोन करिवे किछि ना किछि पॉलिटिकल बेनिफिट के ऑब्जर्व करिवे absence of a strong opposition absence of a strong opposition lack of a strong opposition is another characteristics of a party system in India. A healthy and well organized opposition sustains party system in any democracy. Unfortunately, for so many reasons, although there are a large number of political parties in India, political scenario there is hardly any opposition worth the name. This has led to the critics to comment that
There is no effective party system in India in spite of the presence of so many political parties. देखो पहले absence of a strong opposition. यदि opposition strong न रहे ताले political parties proper way रे function करि परिबो नाही. कहिबार मेन उद्देश्य होचे पहले तमे देखा पहले मु उदाहरण स्वरूप तुम कहिबी जेते बेले बेसिकली ग्लोबलाइजेशन कांसेप्ट न आस्तिला 1991 परे पुरे ता पूर्वरु थिला एलआईसी पूरा डोमिनेटिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गोटे थिला इंश्योरेंस कंपनी से थिला कोन कि एक्चुअली डिक्टेटरशिप बळी तार थिला एक छत्रवाद शासन थिला तेनु आमे जदि कहबा एक छत्रवाद नुए इकोनॉमिक टर्म रे सेटा होची मोनोपोली थिला कारण ता कंपटीशन को केही आसी नथिले वर्तमान देखो एमएनसी आसिला परे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मैक्सिमम एलआई आसी गेलानी लाइफ इंश्योरेंस पोस्टल भी दउची बहुत गुडे प्राइवेट कंपनी दउचंदी तेनु तार टिके मोनोपोली कमी छि ना नाही भाबिनियो 20 वर्ष पूर्व 25 वर्ष पूर्व कॉलेज छक एरिया रे गोटिए कोचिंग सेंटर थिला माछा मार्केट पाखरे से कोचिंग सेंटर टिके डिमांड थिला इन द सेंस जेतबेले गोटिए कोचिंग सेंटर थिला जो पिला जाउथिले सेठी पाठ पढले कोन ना सेही कोचिंग रे ही भलो पाठ पढा वर्तमान सब कोचिंग रे भलो पाठ को एफिशिएंसी ऊपर डिपेंड करूछ पिला माने चॉइस करूछंती को कोचिंग को टीचर को माने प्रकृति रे प्रिंसिपल को कोचिंग रे आइडियोलॉजी कोन तांको से प्रेफर करूछंती तांको पे चॉइस आछी तने ऑटोमेटिकली को अपोजिशन का रहिबा भलो ना मंद भलो सो स्टूडेंट्स एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग अपोजिशन किंतु इंडिया रे सेटा बेले बेले ओडिशा गवर्नमेंट कोन इंडिया गवर्नमेंट रे प्रॉब्लम हुए ओडिशा गवर्नमेंट रे जो दल विनिंग करूथिबो लगातार विनिंग करूथिबो जो दल हारुथिबो छिनछतर होइकि हारुथबो कांग्रेस गवर्नमेंट नेहरू को समय लोक माने इंदिरा गांधी का समय लोक माने कहउतिले हाथ चिन्ह उडी उडी कि आसीबो सेते बेले को पार्टी की केही लोक जाननथिले गोटे चिन्ह जानथिले हाथ चिन्ह 1885 मसिया भाबिनी लोक मानकर गोटे ब्रीडिंग बिलीफ थिला जे सेही प्रकृति रे भारत वर्ष को चळेई परिबो तापरे मझी मझिया किछि किछि आइले पार्ट टाइम डांसर डांस करी पळेई गेले एबे भी किछि किछि जे पावर कहचनी से भी बहुत भय रे एबे अछन कोन तांकर भाग्य चक्र होबो कना ट्रेडिशन को हमें जदि देखिबा प्रिंसिपल को देखिबा 55 वर्ष 60 वर्ष गोटा राजनीति करथिबा लोक परंपरा लोक 5 वर्ष आसीबो बहुत फरक नाही कि मिले absence of strong opposition lack of strong opposition is another important characteristics of a party system in India a healthy and well organized opposition sustains a party system in a democracy unfortunately for so many regions although there are a large number of political parties in Indian political scenario there is hardly any opposition worth the name विरोधी दल जे रहिबो विरोधी दल सेतिकी स्ट्रांग होबा दरकार विरोधी दलकर सेतिकी स्टेबिलिटी नाही this has led the critics to comment that there is no effective party system in India in spite of the presence of so many political parties बहुत गुडे पॉलिटिकल पार्टी अछि तेनु इंडिया रो जो पॉलिटिकल सिस्टम रही छि बा जो पॉलिटिकल पार्टी माने एग्जिस्ट करूचंती सेमानक भितरे किछि स्टेबिलिटी नाही कारण पिले ये जनरल इलेक्शन पर तमे देखिबो बेसी डिफिकल्ट होची कैबिनेट मिनिस्टर को मन रखिबा आमे जो सिविल पिला को पढौचु ये जो चेंज होची बारंबार केते पिला को घोसे आमे भी बेले बेले भूल कहि दउछु अरे जे ए दलर कोटा मिनिस्टर थिला पुनी आर दल जाय मिनिस्टर होई गेलानी ता नाम केते थर घोसिबो कितो डिपार्टमेंट चेंज सेटा गोटे हडल क्रिएट कराए हाउ पिले पार्टी सिस्टम रे आमे देखिले फिर भी गोटे इंपोर्टेंट कथा कहि दउची आमे पार्टी सिस्टम पढुचे पार्टी सिस्टम को सिलेक्शन करे किए इलेक्शन कमिशन आर्टिकल केते 324 आउ से 324 आर्टिकल अन्य ना कोन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज जेटा आई सिविल सर्विस क्वेश्चन आ मन रख पिले वर्तमान ओडिसा रो इलेक्शन कमिशनर किए अछंदी निकुंज बिहारी धळ ओडिसा रो इलेक्शन कमिशनर इंडिया इलेक्शन कमिशनर किए राजीव कुमार देखा पिले however it may be said in the conclusion that parties play an important role to make the democracy a success political party no democracy according to Munro no party no democracy however it may be said in a conclusion that parties play an important role to make the democracy a success the democracy successful they provide alternative teams to run the government
गोटे पॉलिटिकल फिगर बा गोटे पॉलिटिकल सिस्टम रो मेजॉरिटी नाही आउ गोटे पॉलिटिकल हमर जदी अल्टरनेटिव अछि से मध्ये प्रूफ जदी करि परिबो इट कैन रूल दे प्रिवेंट द सेम पीपल रिमेनिंग इन पावर टू लॉन्ग ए पार्टी सिस्टम guarantees the people that change in the government can be effected if they wish देखो पिले आमे पढिले डायरेक्ट डेमोक्रेसी रही स्विट्जरलैंड रे गोटे प्रिंसिपल अछि से प्रिंसिपल ना होची रिकॉल माध्यम रे आमे कोन करिबा जन को रिटर्न बैक करि परिबा सेट बैक कर दे परिबा किंतु इंडिया रे मध्ये सेही भली प्रति 5 वर्ष रे थर इलेक्शन होउची तमे जदी तमरो चॉइसेबल कैंडिडेट न पाइलो ताको वोट न देलो ऑटोमेटिकली तर पावर चेंज होला रिप्लेसमेंट होला तेनु देखिबा हमें they prevent the same people remaining in power too long a party system guarantees the people that change the government and can be effected the wish प्रकृति रे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इलेक्टोरल प्रोसेस रे पॉपुलर सोवरेन कहूची जो दल को बा जो पार्टी की चाहिबे लोक माने ताको अनोनिमसली वोट दे पारिबे सो स्टूडेंट्स द पार्टी सिस्टम always reminds those in power that they own their coexistence to the support of the electorate therefore they must work for the welfare of the society at large देखा बिले जेतले पॉलिटिकल सिस्टम को हमें गले पॉलिटिकल सिस्टम रे जे ही पावर को गला से भाबिया दरकार मु पावर को कहां पई आछी दैट इज पॉपुलर वर्डिक्ट दैट इज पॉपुलर इलेक्टोरल प्रोसेस से इलेक्टोरल प्रोसेस रे जो इलेक्टोरेट माने मते वोट देई चंदी तांकर वेलफेयर एक्टिविटीज गुडा को केमिति मु कोन करबी एक्सेलरेट करबी मोमेंटम करबी त्वरान्वित करबी वन पार्टी डोमिनेंस ए क्वेश्चन ता बहुत समय से one party dominant the party system in India particularly in the first 2 decades after independence is rightly termed as one party dominance as the National Congress held sway over the central as well as state or governments पिले जदि हमें कहिबा हम इंडिया रो मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत वर्ष रे तांको निर्माता कुआ जाय कारण पिले आमे जदि देखिबा 1947 मसिया रो 1964 मसिया 17 वर्ष नियर अबाउट 2 डिकेड्स Indian National Congress held sway over the central as well as the state governments the Congress inherited the legacy of the freedom struggle and with the charismatic leaders like Nehru and others it was expected to win in the first general elections held in 1952 our constitution came into force 26 January 1950 किंतु हमर इलेक्शन रिजल्ट आउ सिलेक्शन सरी गला केबे 1952 रे हमें जदि देखिबा सेते बेले थिला हमर कांग्रेस गवर्नमेंट नेहरू थिले तांकर मेंटर सुप्रीम कमांडर थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस द कांग्रेस इनहेरिटेड legacy of the freedom struggle with charismatic leaders like Nehru and others it was expected to win in the first general election held in 1952 रे win कला कि ना कांग्रेस the party owned 365 parliamentary seats out of 489 in the first Lok Sabha पिले हमर बेसिकली लोकसभा सीट केते रहउची 545 मैक्सिमम 552 किंतु इलेक्शन होइतिला केतेटा सीट पई 489 सीट पई हेतिला कांग्रेस केते विन करतिला 365 the communist party of India came second with only 16 seats communist party जमा 16 टा सीट पाइतिला thus Congress established its hegemony in the Indian political system hegemony in the sense superiority लोकप्रियता जोटा मैं कहू hegemony superiority और लोकप्रियता in the Indian political system from the past general elections the Congress also had its victory in the election to the state assemblies as well जोट भी स्टेट असेंबली इलेक्शन हेतिला सेठी मध्ये कांग्रेस विन करथिला तेनु जेते बेले इंडिया रे जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस रा सुप्रीम ओपन निर्वाचन हेतिले सेते बेले इंडिया रो फर्स्ट ओडिसा रो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के हेतिले हरे कृष्ण महता से भी थिले कांग्रेस रो लीडरशिप नेतिले अगले
Thus, Congress established its hegemony in the Indian political party system from the first general elections. The Congress also had its victory in the election to the state assemblies as well. It won all the states except three: Travancore, Cochin, now Kerala, Madras, and Odisha. But it also formed the governments there in the second and third general elections held in 1957 and 1962 respectively. हाँ पिले तमे जदि कहबो जे हमरो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो होई गेला ये इलेक्शन केतेटा स्टेट रे प्रथम जो 1952 बेले को हमर केरल को मद्रास को ओडिशा को सेते बेले को इलेक्टोरल प्रोसीजर हेई नथिला बा विनिंग कर नथिला कि ना कांग्रेस गवर्नमेंट किंतु ता परे 52 परे जो 57 इलेक्शन आसिला सेते बेले को विनिंग करके आसिले किए पर्टिकुलरली हरिकृष्ण महताब ता पूर्व रहितले जदि हमें कहबा अनरिकॉग्नाइज्ड थिला पॉलिटिकल किछ हमर फॉर्मेशन नथिला. But it also formed governments there in the second and third general elections held in 1957 and 1962 respectively. The Congress maintained its dominance by winning 3/4 of the total seats. Total seat ra 3/4 को कौन करथिला ना कांग्रेस win करुथिला. The opposition parties could not get 1/10 of the seats owned by the Congress. Congress जेतिकी seat win करुथिला opposition तार 1/10 को मध्य win करू नथिले. Many political parties were in the fray, but the central space was occupied by the Congress from 1952 to 1967. 15 वर्ष 1952 to 1967, for which the system is characterized as one party dominant party. तेणु तमर जेतले क्वेश्चन आसीबो what do mean by one party dominance? Now after independence, Congress led government was in power near about 2 decades under the leadership of Jawaharlal Nehru. At that time, the symbolization of party was considered to be dominance. Arbi notes diya haba, short question bhi daka haba. There was competition from other political parties, but there was no meaningful challenge to the dominance of a Congress. Congress को सेते बेले केही challenge करि पारु नथिले. देखो, as the opposition was weak, they were unable to provide an alternative to the Congress. Congress को alternative करिया पई के challenge करिया पई नथिले. However, they were engaged in criticizing and pressurizing the ruling Congress. Criticize करिवे और ruling Congress को मध्य कोन करथिले? Oppose करुथिले. The major reason behind the dominance of a Congress in the Indian party system was its capacity to accommodate different and even conflicting interests and group within it. आमे जदि देखिबा पिले the major reason behind the dominance of a Congress कोन पई dominant रहिथिला? What was the reason? To accommodate different and even conflicting interests and groups within it. जेते बेले देख पिले जो माने opposition रहिले सेमान का भितरे group management proper वे functioning करू नथिला. It functioned as an umbrella party which enabled to garner of the support of divergent social groups. This accommodative approach of the Congress continued from predominant times. It functioned as a broad coalition than strictly as a monolithic party. आमे जदि कांग्रेस पार्टी की कहिबा एटा गोटे अम्ब्रेला पार्टी थिला. अम्ब्रेला पार्टी इन द सेंस सी सब गवर्नमेंट को सब पार्टी की कोन करथिला ना शैडो दउथिला. ताकू शैडो बा ताकू कवर करला वाला को पार्टी नथिले. दैट मींस सुपीरियर इन कंपैरिजन टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज. अलगा पार्टी अपेक्षा सुपीरियर थिला. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अम्ब्रेला पार्टी. So this accommodative approach of the Congress continued from pre-independent times. It functioned as a broad coalition than strictly as a monolithic party. ये गोटा broad coalition भली कोन करथिला फंक्शन करिबा अपेक्षा गोटा monolithic माने single leader कोन थिला पार्टी थिला. The dominance of the Congress during this period was at 3 levels. तीनटा लेवल रे कांग्रेस डोमिनेट रहउथिला. At the power level by monopolizing power, at the level of controlling the space relationship between the state and the society, and at the ideological level by advocating centrist ideology in politics. Okay students, आमे जतबेले कंसीडर करू मु तुमको कहिथिली
मते टिके रिमाइंड करिदब गोटे थिला लेफ्टिस्ट आ गोटे थिला राइटिस्ट पुनी गोटे थिला सेंट्रिस्ट तीनटा थिला पॉलिटिकल पार्टी के तीनटा अकोमोडेशन रुए लेफ्टिस्ट किए राइटिस्ट किए सेंट्रिस्ट किए जदि हमें देखिबा इंडिपेंडेंट परे परे हमर सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा लेड हेतिला कांग्रेस पार्टी दैट इज सेंट्रिस्ट एटीट्यूड मन रख वर्तमान हमें जदि देखिबा लेफ्टिस्ट किए हेले सीपीआई सीपीआईएम राइटिस्ट किए बीजेपी राइटिस्ट किए बीजेपी आ वर्तमान सुधा हमें जदि देखिबा सेंटर रे डोमिनेट कला भलिया सिंगल पार्टी एक्जिस्टेबल नाही कांग्रेस भली किंतु अधिकांश कमेंट करूचंदी आम आदमी पार्टी तार आइडियोलॉजी ना लेफ्टिस्ट ना राइटिस्ट ताको बेले बेले कंसीडर करचंती सेंट्रिस्ट बोली किंतु आमे कांग्रेस रे जेंति इंडिपेंडेंट पर डोमिनेंसिंग थिला से भली प्रकार रे केबेले आम आदमी पार्टी रो नाही सेम जदि देखिबा जर्मन ना हमर लिबरल पार्टी सेटा मध्ये सेंट्रिस्ट पार्टी कारण से पार्टी जेते बेले ही चाहूची तार किछि सेंटर रे फोकस पकोउछ विनिंग करी करी चलछि the major reason behind the dominance of a congress centrist ideology in politics in the 1960 there was substantial change in the nature of Indian party system particularly after 1967 the changes became prominent there are many non-congress governments at the state level देखो बिले 1960 परे परे देखा गला स्टेट लेवल रे किछि किछि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आसिले the change became prominent there are many non-congress governments at the state level coalition governments were formed many states with non-congressional parties गोटे गोटे जगह रे मध्ये coalition government formation हला fourth general election initiated the process of a coalition politics in India को general election fourth general election try to remember it try to mark it out to pencil एगुडा सब अंडरलाइन पिले करो देखा Fourth general election initiated the process of coalition politics in India. The Congress became weak at the center also because of its dissidence and factionalism within it. 1960 परे परे कांग्रेस रे किछि किछि फैक्शन देखा गला डिवीजन देखा गला it led to the split in Congress in 1969 1969 ने कोन हला कांग्रेस रो किछि किछि स्प्लिट देखा गला the model of a consensus on the basis of which Congress was functioning became weak with far-reaching consequences for the party systems in India. Party system रे जो political manifesto थिला, electoral declaration थिला, सेगुडा मध्ये proper way रे function कला नाही. There are also other socio-economic reasons. आउरी बहुत गुडे socio-economic reason मध्ये रहिथिला behind these changes. The new classes that emerged in post-independence India in these years accepted themselves and wanted to have their share in political power. कांग्रेस पार्टी जतबेले फॉर्मेशन हला 1885 रे जो मेंबर माने थिले सेमानकर किछि किछि सेल्फ इंटरेस्ट रहिला सेल्फ इंटरेस्ट जो रुए साधारणतः डिवीजन हेई थाए सेपरेशन हेई थाए तेनु कांग्रेस रा ऑटोमेटिकली स्प्लिटिंग हला तमे जानि थिबो बहुत गुडा हमर मध्ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन हेइछि केबे फॉर्मेशन हेइछि सेगुडा को लिस्ट अनुसार हमें डिक्टेट करिवा पुनी पिल्ला आसिला हमर कोलिशन पॉलिटिक्स Coalition simply means an acting of coalescing or uniting into one body. It has been derived from the Latin word coalitio, which means to grow together. General election परे कौन सी गोटे पार्टी लीडर इलेक्शन ने विन कला नहीं. So democratic order कहूची जो माने विनिंग न कले सिंपल मेजॉरिटी बा सिंगल मेजॉरिटी कौन सी पार्टी नहीं क्या सिलानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किछि गुडिया दल कोन करिवे मोर देन 2 से माने कोन करिवे कन्फाइनमेंट आनी मोर देन 1 कन्फाइनमेंट आनी गोटा यूनियन फॉर्मेशन करिवे एवं जो यूनियन को बेसिस करी पार्टी फॉर्मेशन होबो तमे जानिथिबो इंडिया रे वर्तमान कोन चली छि यूनियन चलछि ना नहीं गोटे चली छि एनडीए कार फॉर्मेशन बीजेपी रो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कांग्रेस आउ किछि पार्टी मिसी कोन फॉर्मेशन करचंदी इंडिया करचंदी ना नहीं इंडिया रो फुल फॉर्म कोन आई रे कोन हला इंडियन एन हला नेशनलिस्ट इंडियन नेशनलिस्ट
डी रे डी रे डी रे इंडियन नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस किंतु शरद पवार से डेमोक्रेटिक सेटा बहुत बर्तमान कॉम्प्लेक्सिंग इश्यू आछि ताको अधिकांश कोन कहउछन्ती अरे डेवलपमेंटल कांग्रेस गवर्नमेंट रो किछि कहउछन्ती डेवलपमेंटल शरद पवार कहउछन्ती ताको डेमोक्रेटिक तनु सेटा कंफ्यूजन भीतर रही छी तमे मन रख इंडियन नेशनलिस्ट डेवलपिंग इंक्लूसिव अलायंस बा डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गोटे आ गोटे होची इंडियन नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस तेणु जिते से पार्टी जीति जीव आम परफेक्टली कहवा तार फुल फॉर्म टा कौन रोच दीटा जाक मन रख हेले भी कांग्रेस वाला जहाँ कहते राहुल गांधी से जोटा आमर डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस So students, coalition simply means an act of coalescing or uniting into one body. It has been derived from the Latin word coalitio, which means the power, the means to grow together. In political terms, it implies an alliance or a temporary union of political forces for forming government. Government formation ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ temporary କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ formation ଆଣିବା ବା reform କରିବା. Different political parties, even with a conflicting interest and ideology, come together in a coalition out of a common fear or out of the necessary that their goals can be achieved if they remain separate. जदि separately रहिले political field रे तांका object गुडा का केबे fulfillment हेई परिबो नाही तेनु से गोटे coalition रहिबे गोटे grouping रे रहिबे. Coalition can be of three types. तीन प्रकार coalition रहिला गोटे होची parliamentary coalition गोटे होची electoral coalition आ गोटे होची गवर्नमेंटल कोalition. कोalition रहला तीन प्रकार रा ट्राई टू रिमेंबर स्टूडेंट्स गोटे होची पार्लियामेंटरी कोalition आ गोटे इलेक्टोरल कोalition आ गोटे होची गवर्नमेंटल कोalition. If no party has a majority in the parliament to form government, then a party can form the government with the support of others in the parliament. देखा पिले गोटे पार्टी रा पावर रहलानी किछि पार्लियामेंट रे मेजॉरिटी नाही तेणु से पार्टी कौन कर बहुत गुटे पार्टी सहित असेम्बलेट हो पार्लियामेंट रे कौन कर गवर्नमेंट फॉर्म कहले पार्लियामेंटरी कोalition. इलेक्टोरल कोalition आर अरेंजमेंट्स एमंग पार्टीज टू हैव इलेक्टोरल एडजस्टमेंट एमंग देमसेल्व्स डिसाइडिंग नॉट टू फील्ड कैंडिडेट अगेंस्ट ईच अदर. इलेक्टोरल कोalition इन द सेंस कोन गोटे पार्टी रो आ गोटे पार्टी सहित कोalition रहइबो एवं जोटी गोटे पार्टी छिड़ाई जी तार जे प्रिफरिंग पार्टी सेटा पार्टी मेंबर दबनी बुझीपार ना धरा जाऊ मु कहि बर्तमान बीजेडी बीजेपी कोalition करेंगे तेणु जो बीजेडी छिड़ा होती बीजेपी आउ दब ना छिड़ा कंपिटिशन में किए कांग्रेस ऑटोमेटिक दीटा वोट दी प्रकार वोट आसीबो बीजेडी और बीजेपी रो वोट आसीबो गोटे सेंट्रल अथॉरिटी की. देन कोalition एट द गवर्नमेंटल लेवल कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स. The national government in emergencies with the participation of a major political parties is one kind of a coalition at the government level. नेशनल लेवल रे बहुत गुडे पार्टी कोन करंती कोalition को आसंती. अनदर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग बाय मोर देन वन पार्टी जॉइनिंग द कोalition. पिले देखो यदि हमें कहबा यूपीए उपा उपा गवर्नमेंट फॉर्मेशन हेतला का द्वारा कांग्रेस उपा ऊपर फुल फॉर्म कोन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रहिला कारण कांग्रेस रो पुनी एनडीए रहिला कार बीजेपी रो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ये दीटा मन रखी था पिले कोalition पई एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोalition. The coalition politics in India started after 1967 elections. Non-Congress opposition parties defeated Congress in 6 states by forming coalition formation pay. But Congress returned back to power in 1971. 1971 मसिया रे कांग्रेस पुणी पावर को आसिला. But the next phase of coalition politics began with the defeat of Congress in 1977. 1977 ने पुणी कांग्रेस फॉर्मेशन हला defeat हला पर पुणी coalition. The emergency declared by the Congress led towards defeat and to the unity of the opposition parties. एवं opposition party रो unity पई जोटा परफॉर्मेंस करि था. Janata Party was formed and coalition government came at the center. Honor Morarji Desai.
मोरारजी देसाई के समय आम जानिथिबो विशेषकर नेशनलाइज हेतला बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक्स पिला माने बट दिस गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट इट्स फुल टर्म कंप्लीट कलानी 5 वर्ष. Another experiment of a coalition under Charan Singh also could not survive because of its inner contradictions and ideological differences. गोटे पार्टी भितर कौन होउची different ideology रो लोक रहउचंती. That's why there is inner contradictions and ideological differences. The weakness of experiments of a coalition during this period again gave opportunity to Congress to come back to power in 1980. Congress पुणी 1980 रे कौन कला ना पावर का सिला. However, its support base declines, which laid the foundation for future coalition politics in India. पुणी पिले कांग्रेस रा 1980 परे परे जोटा ही प्रकृति रे setback करेला for coalition politics in India. Coalition governments were not there at the center. 1980 to 1989, though there were such governments in some states like Tamil Nadu, West Bengal, Tripura and Jammu and Kashmir. State रा मध्य पिले बेले बेले कौन हुए ना coalition government formation है इताई. Before 1989 general elections, Janata Dal was formed and entered into alliances with some regional and left parties and BJP. पिले before 1989 election पूर्वरु जनता दल गोटे जेडी formation है इतिला and entered into alliances with some regional parties, left parties and BJP. Regional parties, left parties, BJP. A coalition was formed in the name of a National Front. In October 1988, it formed the coalition government at the center in 1989. 1989 मसीह रे गोटे coalition government formation ହେଇଥିଲା under VP Singh. Both BJP and left parties supported this government from outside. तेणु जो नेशनल फ्रंट फॉर्मेशन हेतिला अंडर द लीडरशिप ऑफ वीपी सिंह कोalition रे बोथ बीजेपी और लेफ्ट पार्टी ताको सपोर्ट देथिले आउटसाइड रो. दिस कोalition वाज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स इन 1977 एक्सेप्ट द कॉमनलिटी ऑफ द एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म जोटा एंटी कांग्रेस पई ऑपरेटिंग करथिला. द इश्यूज वर डिफरेंट इन बोथ द कोalitions. ए कोalition इश्यू गुडा टिके डिफरेंट रहिला. इन 1977 इन द बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, the issues of restoration of democracy, protection of civil rights, etc., brought different parties together to form coalition. पिले 1977 मसीह थिला coalition. से coalition द basic object थिला कोन restoration of democracy, protection of civil liberty, etc., brought different parties together to form the coalition. But in 1989, both national and regional issues were taken up by the National Front like corrupt, etc. Though this coalition government was an improvement over earlier experiments, still it suffered from internal and external crisis. जेते बेले coalition government formation हुए, जो मैंने coalition रहले तांकर टिके डिमांड अलगा प्रकार रहिबो. VP Singh government जेते बेले formation हेतिले तमे जाने दिबो वर्तमान आमे जो कहूचे OBC other backward classes सेटा VP Singh गवर्नमेंट कर लेगासी एवं ता पर गवर्नमेंट मध्ये ताको किछि रखिचंती. विशेष करी ताको पे गोटे कमिशन गठन कर दिले जा तमे कहूचे मंडल कमिशन. सेते बेले गोटे इश्यू आसीथिला मंडल आउ मंदिर आउ मस्जिद. मंदिर मस्जिद समाधान हे गला. मंडल टाको जो रहिची ओबीसी कर सिलेक्शन प्रोसीजर को बेस करी गवर्नमेंट मांगी दिला. VP Singh गवर्नमेंट को जनता दल नेशनल फ्रंट को सपोर्ट देथिले किए बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज. किंतु देखा गला सेते बेले बीजेपी रा सुप्रीमो थिले किए ना LK आडवाणी. LK आडवाणी कोन कले राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद रे मंदिर हबो बोली सारा भारत रे रथ चलिबो. से रथ को कोन करा गला अरेस्ट करा गला बोली बीजेपी कोन कला विथड्रॉन कला पावर. ई सब गोटे गोटे हिस्ट्री से भाई मंत्रिमंडल भांगी थिला. There were a difference over implementation of a Mandal Commission recommendations and over the Rath Yatra of a BJP for Ram Temple in Ayodhya. The VP Singh led coalition government fell after the withdrawal of the support from a BJP. BJP jete bele support karne gale मंत्रिमंडल भांगी गला. Again there was a slip in the Janata Dal led to the formation of a Janata Dal AS
सेतिक बेले इंडिया रे प्राय 3-4 जन प्रधानमंत्री हे गेले भाग्य बसत आज आइला अल्प दिन पहला कि प्रधानमंत्री हेगला मंत्रिमंडल हेगला प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल हेगला एम चल घोसी घोसी खाली मुंड खराब होला ये कि there was a slip in Janata Dal led to the formation of Janata Dal S and this new formed government at the center under Chandrasekhar मोदी तापेक्षा आउरी बहुत लंबा रखिले दाढ़ी तेणु चंद्रशेखर द सेंट्रल अंडर चंद्रशेखर विथ द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस आउ सी हाईएस्ट गोल्ड इंडिया रा मॉर्गेज करथिले चंद्रशेखर जेते सब गोल्ड थिला सब मॉर्गेज करी पैसा आनी राष्ट्र चलौथिले बट दिस गवर्नमेंट कुड नॉट सर्वाइव एज कांग्रेस विथड्रू इट्स सपोर्ट इन 1991 कांग्रेस हम समस्त को सपोर्ट देछि अल्प दिन पई पुनी रिलैक्स करनबो विथड्रॉ करनबो In the general elections in 1991, Congress could not win a clear majority, but managed to form the government under P.V. Narasimha Rao. यही इंडिया ପାଇଁ ଗୋଟେ टर्निंग पॉइंट 1991 यही आसिला पिले कोन ना एंडिंग ऑफ कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन अमेरिका भीतर जो वार थिला सेटा एंडिंग के आसिला आ पीवी नरसिंह राव आसीबा द्वारा जो विशेष कर कांसेप्ट रहउची इंडिया रे कोन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ये गुडा कांसेप्ट आसिला आ गोटे बड़ सिनेरियो आसिला बेसिकली मनमोहन सिंह कर जो कांसेप्ट थिला हमर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रो से गुडा मध्ये अपडेटेड होला इन 1996 जनरल इलेक्शंस बीजेपी emerged as the single largest party but could not win the confidence motion in the parliament and lost power in 13 days जो 13 डे 13 दिन पई बीजेपी पावर सी भांगिला सेते बेले प्रधानमंत्री किए थिले 13 डेज पई अटल बिहारी वाजपेयी द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय एसटी देवेगौड़ा फॉर्म द गवर्नमेंट एसटी देवेगौड़ा हेले कोन प्राइम मिनिस्टर and there was a change in the leadership again IK Gujral then led this coalition this united front experiment of a coalition government could not continue as a Congress withdrew support in 1998 1998 मसिया कांग्रेस सपोर्ट को कोन कला विथड्रॉ करला पुनी देखिबा पहिले in 1999 elections NDA the coalition led by BJP came to power National Democratic Alliance ro asila BJP power ko this coalition government completed its term and was relatively stable than earlier ones. It worked on the basic consensus though there are strains and contradictions in it. जो NDA government रे बहुत किछि contradiction by criticism थिला. Regional parties became more prominent in national politics. Regional party माने कोन कले बहुत किछि ऑपरेटिंग रोल कले जानि थिबो ए समय रे हमर विशेष करी ओडिसा रे जे सुप्रीमो अछथि नवीन पटनायक स्टील मिनिस्टर center रे थिले so students this is a new era in coalition politics of the country it established the fact that no single party can come to power on its own at the stage of Indian politics रे खाली coalition चलिला senior most मान को position बा power दियाला किंतु political stability आसिला नहीं coalition politics and growing importance of regional parties is now the marked feature of Indian party system Indian party system it house bad nature by character the one party dominant system is already a thing of the past tale one party dominance India राव नाही कांग्रेस जेमति नेहरू को समय रे one party dominance थिला से भलियाव नाही this pattern continued with the replacement of NDA by UPA 1 and 2 from 2004 to 14 2004 ରୁ 2014 रे UPA is a coalition led by Congress. Left parties were with UPA 1. देखो आमे जदि कहिबा ये again regional parties played key role in this coalition. Regional party मध्ये operating role कले. In 2009 the 15th Lok Sabha elections Congress led coalition UPA second came to power. और कासिला for the first time in more than 2 decades distance रे
A government that completed its full term got re-elected. After re-elected in both the elections in 2004 and in 2009, 2009. Coalition politics asserted itself as a dominant feature of Indian politics. Indian politics ର coalition factor ଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ dominating ରହୁଛି ଏବଂ before 2014 ପରେ ପରେ political field ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିଲା, that is the advent of Narendra Modi. Something different ideologically, something different politically, something different internationally, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ exist କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି. So before 2014 elections, no national party was in a position to get clear cut on their own to form the government. At the center in this period, more than 2 decades, this became the basis of a coalition politics in the country. Coalition country by it got a basis. The regional parties were crucial in the coalitions. Regional parties, विशेष कर देखा West Bengal रे ममता बनर्जी TMC, ओडिशा रे BJP, कादरा BJD नवीन पटनायक. The three coalition governments completed their full term, which led to observers to comment that there is no alternative to coalition politics in India at present. India prakriti re au kichi alternative nahi except coalition politics. The socio-economic diversity of the country, it a main reason why there is coalition politics in India. The socio-economic diversity of the country, the growing assertions and the democratic consciousness of the marginalized sections of the society, the growth of regional parties are important factors behind the phenomena of coalition politics. यदि हम के क्वेश्चन करें what are the reasons for coalition politics, ये तीनटा पॉइंट को मन रखिबो. सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ग्रोइंग assertions and democratic consciousness. अच्छा हमर थर्ड हैला कोन, the growth of regional parties. Hopefully ये जाके पढ़ो. पेज रो स्टार्ट करियो. सोशियोलॉजी एबे अछि. फोन करियो.